let us solve one quadratic equation, but the equation looks like this. Solve the quadratic equation root 2x square. X square for quadratic, root 2 is the coefficient of this, plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. This is your question. You have to find the values of x. There will be two values of x, as it is a quadratic of second degree, 2 power. So how we will start this? For solution, see, just take this one and this one, root 2 and multiply 5 root 2. You must remember always that root 2 into root 2 is 2. Therefore, 2 into 5 is equal to 10. The product is 10 positive. As here it is positive, here it is positive. So now we have to make two parts of this 10 such that it becomes either adding and subtracting plus 7. So 2 5 ja, 2 into 5 is equal to 10, positive 10. This 2 has come. And if you will add 2 plus 5, it is also 7. This is all here 7 required. Only put x together and place for the 7x. 7x is equal to, you write here root 2x square plus 2, this 2x plus this 5x. Check. 2x plus 5x, 7x. Then plus 5 root 2 equal to 0. This is your important task to reach the middle term. And now take common this and this. What is common here? Root 2 is here. The important thing you have to learn, here it is only 2 and you need root 2. So one stage I am teaching you such that how you will get root 2x square. You can write similarly. This root 2 into root 2 is equal to 2. Therefore, you write first here root 2 into root 2x. This is important. You have to learn. How you have got this 2? Root 2 into root 2 is 2. Why? Because there is root 2 here to get common. Now here plus 5x plus 5 root 2 equal to 0. Here see 5 is already ready to get. Okay, so no need to change anything. Now you take root 2, x and x is common. So root 2x is common. What left? X. X into x square, root 2x square plus root 2x is common. So you write here only root 2, close it. Plus, what is common here? 5. Nothing else. So open the bracket. X, here see x, plus, and then root 2, 5 is common, you have to write root 2 here. Okay, get 0. Now, see here it is same and same, there is a plus sign in between. So take this as a common again, 1 plus root 2 under bracket, then this plus this, root 2x plus 5. Equal to 0. Now you have to solve the equation. So you have two products equal to 0. Therefore, either this is 0 or this is 0. If x plus root 2 is equal to 0, therefore x is equal to, here it is plus, minus root 2. One of the answer is this. If root 2x plus 5 equal to 0, therefore x is equal to minus 5 divided by root 2 is the second x value, and this is the answer.
Okay, thank you. The next question for solving the quadratic equation, this is root 3x square minus 2 root 2x minus 2 root 3 is equal to 0. So how you will start and solve it? Here you see root 3 and minus 2 root 3. Take root 3 and the product of minus 2 root 3. Root 3 into root 3 is 3, minus 2 into 3 is equal to minus 6. Now 3 into 2, this factor of 6 is equal to 2 into 3 is equal to 6. So these two can be written as root 2 into root 2 into 3. Okay? So 3 root 2, take one part 3 root 2, here it is 2 into 3 is 6. But here you need minus and 2 also. And this root 2, 3 root 2 minus 1 root 2. See here, 3 root 2 plus, make it plus, take it minus. Okay? So that the larger 3 root 2 minus not plus 1 root 2 is equal to minus 2 root 2. So we will put this value for 2 root 2, 3 minus 1, 2 and root 2 x we will put x also here. So right here root 3x square, very important things, root 3x square minus 3 root 2, 3 root 2 x, okay, plus 1 root 2 x. See here, 3 minus 1, 3 minus 3 plus 1 minus 2 root 2x root 2x. So this is your, okay, this is important. If you will multiply, it will give minus 6. 2 into 2, 2 and minus 3 into 2, 6. So our, here it is. Okay, now put here minus 2 root 3 equal to 0. Understand? Now you have to take, see here it is root 3 but not root 3 here. So to make root 3, you can write here root 3x square minus root 3 into root 3. Understand how this root will come and becomes 3 only. Then also here you will get 2 and x plus. In this 2 is here. These 2 will be made as root 2. So what you will do here, see, root 2x minus 2 times root 2 into root 2 into root 3. Understand? This is important. This 3 is written 2 times to get root 3 and the value back to 3. These two make root 2 into root 2 to get 2 and root 3 was already there like this. Now you can take common very clearly. Root 3 x. Take root 3x as a common. What is needed here? X. Root 3x square minus root 3 already taken, root x is also, these two has been taken. So what left here? Root 3 into root 2. So if you write first like this, so that you're no confusion. Root 3, root 2. This is common. Plus, here what is root 2? Common root 2. Here x minus root 2 into root 3. The same thing has come here. Root 2 into root 3. Close it. Make it 0. Okay? You can rub it also. This is for beginning, starting also. Okay. Now take this. Root 3 and root 2, you must know that root A into root B is equal to root AB inside.
Similarly, here these two things are under root, so you can write it root 3x under bracket x minus root 6, then plus root 2 x minus root 6, close it 0. Now take common this x minus root 6, one of the factor, and another is root 3x plus root 2 equal to 0. Now if x minus root 6 is equal to 0, this is equal to 0, the value of x will be root 6, and this is your one answer. If root 3x plus root 2 equal to 0, then root 3x is equal to minus root 2, and x is equal to minus root 2 divided by root 3, and this is your second answer. Let us see the another question number 3. For solving the quadratic, find the values of x. Here you see that the coefficient of x square is positive 3. So positive 3, then multiply with the constant term plus 2. This is plus 6. Now you have to make two things such that the middle term comes in root 6. So here you need especially root 6. So take root 6 into root 6. Understand this logic? Root 6 is required. These two root 6 multiplied returns back to this 6 only. Okay, we need 6 here for the product of 3 into 2. Now, here demands two numbers of negative root 6. So, keep minus 1 root 6 into minus 1 root 6. Here it becomes 2 root 6. You can put x and give for here both the things. Then solution, come to this point. 3x square minus 1 root 6x minus 1 root 6x become minus 1 1 2 minus 2 root 6x. This is equal to this. Now here it is plus 2 equal to 0. Here you see there is 3 and here it is root 6. So how can we take common? First this 3 you write root 3 into root 3, then x square, and minus root 6 can be written as root 3 into root 2. Understand the point? root 2 into root 3 6, अलग अलग होने से एक के अंदर लिखा जा सकता है. तो रूट 6 को ये सीखने का चीज़ था 3 को. अब देखो रूट 3 कॉमन आने लगा. उसी तरह से ये 1 को लिखेंगे. यहाँ हम लोग लिख दिए 3 के लिए रूट 3, फिर 6 के लिए यहाँ लिख दिए हैं हम रूट 3 इंटू रूट 2x, फिर माइनस है यहाँ भी लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 2x. क्लियर? यहाँ पर है रूट 3 रूट 2x, यहाँ पर है रूट 2 रूट 3x. और ध्यान से सीखना. लेकिन इसमें देखो रूट 2 है ना, यहाँ 2 है सिर्फ, तो इस 2 को भी प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 लिखो, तभी ये कॉमन लेकर के x की तरफ निकाल. बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ये. 3 था, यहाँ रूट 6 था, ये तो रूट 6 इसके लिए लाया गया था और 1 1 जोड़ करके अब हम लिख दिए हैं इस तरह से. ये भी रूट 6 है, ये भी रूट 6 है, ये 2 के बराबर है रूट 2. अब देखो आप कॉमन इसके बीच में लो और इसके बीच में बहुत सावधानी से कॉमन लो, हो जाएगा. क्या कॉमन है? x है. क्या कॉमन है? रूट 3 है. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रूट 3x एज ए कॉमन. हो गया.
√3x हो गया तो बचेगा क्या यहाँ पर, √3 बच रहा है और साथ में एक x और डालना पड़ेगा, फिर माइनस डालेंगे, √3x हो गया है तो x हो गया है तो यहाँ पर √3 भी हो गया है, ये दोनों हो गया तो यहाँ क्या बच रहा है, √2। बंद कर दो इसको, अब समझ में आया। यहाँ माइनस लिखेंगे, इसमें देखो क्या है, √2 है कॉमन, तो √2 कॉमन ले लो। यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 कॉमन है तो √3x लिखेंगे, देखो √3x लिख दिए, यहाँ √3x लिख रहा है। अब देखो यहाँ बाहर में माइनस है, यहाँ प्लस लाना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जो यहाँ ज़रूरत भी था, क्योंकि ये फिर कॉमन होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। √2 हो गया है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक √2 और लिख देंगे तो हो जाएगा √2। देखो √2 इंटू √2 इसके बराबर हो गया, √3x और √2 इसके बराबर का क्लोज कर दो, 0 कर दो। अब आप फिर इसको कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हैं, √3x माइनस √2, एक फैक्टर हुआ और दूसरा भी इसी तरह का आ रहा है, कोई बात नहीं है, √3x माइनस √2 बंद कर देंगे, 0। अब दोनों सेम है तो x का वैल्यू भी सेम आएगा, तो देखो यदि ये हम 0 करेंगे तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, √2 डिवाइडेड बाई √3, ये आंसर आया है। ये उधर गया तो प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई था नीचे आ गया। यदि इसको 0 करोगे फिर भी x का वैल्यू सेम है ना, √2 डिवाइडेड बाई √3, और यही दोनों आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है जो आपको सीखना चाहिए। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस में किस तरह से कॉमन निकालते हैं और वैल्यू निकल जाता है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू फाइंड द value of x in a quadratic equation. Here is the question, √3x square plus 10x minus 8√3 is equal to 0. These questions are having root problems in the quadratic as the coefficients or in the middle term. So how to start and solve it? Similarly, as I have already told you, the coefficient of x square and the constant term to be multiplied first with sign. So here it is √3 into minus 8√3. This √3 is nothing but 3 and minus 8. This is equal to minus 24. And if you make a factor of 2 factors of 24, 2 से 12 दूनी 24 हो गया। 2 और 12 यहाँ लाना कितना है, 10 लाना है, प्लस लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस है प्रोडक्ट, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 12x माइनस 2x कितना आ गया, इक्वल टू प्लस 10x, जो यहाँ चाहिए। हो गया, ये तो रास्ता हो गया, फैक्टर भी हो गया, सारा कुछ समझ गए हो। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन और देखो कैसे ये आगे बढ़ करके सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x हो गया ना, 12 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और पॉजिटिव बचेगा। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, और ये प्लस और माइनस, तो माइनस 24 भी आ रहा है। ये आप समझ गए, मिडिल टर्म तो हो गया, लेकिन इससे और थोड़ा सा कुछ सीखना है, वो ध्यान दोगे। अब यहाँ लिख रहे हैं 8√3 इक्वल टू 0, लेकिन देखो यहाँ पर √3 है, इसमें है ही नहीं, तो कैसे क्या करें 12 को, यही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो मैं सिखाऊंगा आपको। लिखो यहाँ √3x स्क्वायर प्लस, पहले इसका 2 फैक्टर कर दो, 4 इंटू 3, 12 तो है, 12 है, 3 भी आया। अभी और एक लाइन करेंगे तब यहाँ लिखेंगे माइनस 2x, और इसमें का एक x भी है, ये देखो 12x माइनस 2x माइनस, अब इस 8 को भी ना 4 इंटू 2 कर देते हैं। देखो इधर 2 है तो 2 भी आ गया, और फिर इसमें 4 इंटू 2 8 हो गया, और साथ में √3 था, बहुत केयरफुली
√3x², 12 को लिखा गया है 4 इंटू 3 12x माइनस 2x, देन अगेन -8 को लिखा गया है 4 इंटू 2 8 हो गया और √3 साथ में आया। अब देखो यहाँ पर अभी भी √3 नहीं दिख रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वो भी आ जाएगा। x² प्लस 4 रहने दो, 3 को ना 2 बार √3 लिख दो, हो गया ना 3 के बराबर, x भी लगा दो, माइनस 2x रहने दो, माइनस 4 इंटू 2 √3 इक्वल टू 0 हो गया। 2x है, यहाँ 2 है, कॉमन आ जाएगा, 4 है, √3 है, यहाँ भी देखो 4 है, √3 है। अब आपको इसमें जैसा कि सिखाए हैं, इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन लेना चाहिए। ये सिखाने दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप खुद इसको ट्राई करोगे। देखो √3 है, x है, यहाँ √3x है, तो कॉमन लेंगे क्या, √3x ब्रैकेट कर दो। ये समझ में आया। अब यहाँ पर एक x और मांग रहा है, तब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x² आ गया, प्लस है ये √3x कॉमन है तो क्या बचा, 4√3 बंद करो। अब यहाँ देखो माइनस लेंगे और 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है, 2 है, x लिख सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ बाहर में माइनस है और यहाँ माइनस लाना है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस देखो इससे मैच करने लगा, ये सब ध्यान देने का है। अब यहाँ लिखेंगे तो 2 कॉमन हो गया है, तो क्या बच रहा है, 4√3 बंद कर दो, 0 लिख दो। देखो तो ये फिर कॉमन आ रहा है, एक बार कॉमन ले लो, x प्लस 4√3, दूसरा फैक्टर क्या होगा, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब या तो ये इसको यदि 0 लेंगे तो लिखेंगे क्या, x इजिकल टू, ये उधर चला जाएगा, -4√3, ये 0 पार्ट लेते हैं तो ये एक आंसर आ गया। यदि इसको हम लोग लेंगे तो इसके लिए भी x क्या आएगा, देखो ये उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा √3 से, ये आंसर दूसरा वाला आ गया। क्लियर कैसे हो रहा है, इसको 0 करना है तो ये उधर जाएगा प्लस से तो माइनस हो गया, और यहाँ x ये उधर गया तो प्लस हो गया और मल्टीप्लाई था ये आ गया। ये समझ में आया। ये स्टेज सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके किए आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से नहीं कर। देखो एक और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के x के वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखो, √7x² माइनस 6x माइनस 13√7 इक्वल टू 0 है। सॉल्व फॉर x का वैल्यू निकालिए। तो स्टार्ट हम लोग जैसा कि बार बार 2-1 क्वेश्चन और बता चुके हैं, अब कुछ नहीं, बस सिंपली दोनों को कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करो विथ साइन। तो देखो √7 इंटू माइनस 13√7, ये पहला काम करना चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोसेस से जाओगे सब बन जाएगा क्वेश्चन, चाहे जैसा भी दिखेगा। दूसरा इसका रिजल्ट क्या आया, 7 इंटू 7 तो 7 हुआ, इंटू माइनस 13, 13 सत्ते 91, 91 आया, ये प्रोडक्ट -91 आया। अब यहाँ है 6x, तो देखो बहुत ही आराम से दिख रहा है कि +7 -13, 6 6 12 और 1 13, कितना आ रहा है, -6 आ रहा है ना, 6 और 6 12 और 1 13 आ जाएगा। 13 में से 7 जोड़ दो तो कितना हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 जो बचेगा, 6 6 12 और 1 13, यही है बीच वाला टर्म। कैसा है, 6 के बराबर है, कैसे, इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो, तो देखो हो जा रहा है ना, माइनस नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव आएगा और 6 आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैसे और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, √7 लिख दो, x² लिख दो, माइनस पहले लिखते हैं +7x, 7x, फिर
13x। देखो तो ये 7 13 का जो डिफरेंस है 6 6 12 13 है ना। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे -13√7 = 0। ये समझ में आया, बहुत ही आसान था ये करना, लेकिन ये मेथड एंड प्रोसेस जानना है और खुद करना है। अब देखो यहाँ पर √7 तो है, लेकिन यहाँ √7 नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉमन ले सकते हैं। और जैसा कि सिखा चुके हैं कि 7 को रूट में कैसे लिखना है, एक लाइन और आप करो, √7x²। इसके बाद लिखेंगे 7 के जगह पर ना √7 × √7 लिख दो, ये 7 ही है, x लगा दो, माइनस, इसमें करने का दरकार नहीं, देखो 13 आ रहा है तो इसमें यहाँ 13x लिखो और -13√7 = 0। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये काम विशेष रूप से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जानना चाहिए। अब देखो यहाँ √7 x ले लो, √7x कॉमन, √7x कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x बचा, प्लस बचा, एक ये कॉमन हो चुका है तो यहाँ क्या बच रहा है, √7। ये समझ में आया। माइनस ले रहे हैं और क्या ले सकते हैं, 13 दोनों तरफ है तो 13 ले लिए, ब्रैकेट किए, देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस लाना है तो 13 लिए हुए हैं तो x तो आ गया, -13x, यहाँ माइनस लाने के लिए आपको प्लस देना चाहिए, देखो यहाँ प्लस है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, नहीं तो गलत कहीं हो रहा है। तो अब लिखेंगे यहाँ 13 कॉमन हो गया है तो √7 लिख दो, बंद कर दो, 0 कर दो। अब आराम से फिर से इसको और इसको कॉमन एक बार ले लो, x + √7 ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ लिखेंगे √7x - 13 = 0। अब फिर वही बात कि यदि ये इफ़ x + √7 दो प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है। यदि ये 0 है तो x का क्या वैल्यू आएगा, तो 0 लो और यहाँ लिखेंगे x = -√7। यही आंसर है, यही आंसर है, -√7, ध्यान देना। अब इफ़ ये पार्ट √7x - 13 = 0 यदि है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -√7x = 13, उधर जाएगा तो, और सिर्फ x निकालना होगा तो 13/√7। ये दूसरा आंसर है। x के दो वैल्यू निकले, एक यहाँ और एक यहाँ। अच्छी तरह से समझ गए। अब इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने बुक से या कहीं से भी किसी एग्ज़ाम में आए तो ज़रूर सॉल्व कर सको। थैंक यू वेरी मच।